Everybody, and welcome back to my channel again. Today in this video I'll be continuing Periodontics Synopsis. This is part 3 of Synopsis, and today we will be discussing from point number 10. We have few more tables, so we'll try to complete all this. And the people who are new on my channel, I want to say that if you are starting dentistry and you want to give higher exams, or even if you want to get basic knowledge of different subjects, different final year subjects, or each and every subject, because I cover all subjects of dentistry in this channel. So either it's first year, second year, third year, final year, you're preparing for MDS, you want to give any government exams, you can watch my videos as well as recommend to your friends and families who are in dentistry. And do not forget to hit subscription icon and hit notification bell, so that whenever I upload a video you just get notified. So thank you for your all support, and I'm hoping that I'll be able to make more and more videos and more better for you all. Okay, so let's get started. This is the table. Okay, so in the previous videos I have covered a number of curates, Gracie curates, universal curates, the classifications, their modifications, that is extended shank curates, mini blade curates, that is after 5 or mini 5 curates, American Gracie curates, Langer and mini Langer curates. Okay, so all this I have covered in the first video. In the second video I have talked about different instrumentation angles, and what type of angle you need to keep in scaling, and what type of angle is in curettage, and different things, different types of instruments, treatment plans, that is the basic stages, preliminary, phase 1, 2, 3, 4. So I've discussed it in the second video also. Now this is the third video. I'm talking about the suture. Okay, in the second video I've also talked about suture techniques, and all these old names and new names I have discussed it in the previous video. Now I'll be talking about table number 12. So we'll see different diseases as well as different immune responses that are elevated in response to that disease particularly. So let's get started. Talking about ANUC, that is called as acute necrotizing ulcerative gingivitis. It's a gingivitis condition. Okay, so if we talk about the features of ANUC, let me tell you some of the general features. That ANUC is the one which is you can always find that there is some fever, and as well as you can also have see some of the lesions as well as vesicles having pseudomembranes. ANUC is particularly the one which is having crater type of lesions. Okay, crater type of lesions, that is very much common, and it is very much associated with the disease called as HIV. The people suffering from HIV have high chances of having ANUC. So all these are the features of ANUC. Very important thing, that is crater like lesions that you're going to see, pseudomembrane appearances. So in this case the immune response reacts by elevating antibody titers to intermediate size spirochetes and Prevotella intermedia. If we talk about the particular organisms which are found in the ANUC, so in ANUC you'll be finding fusobacteriums, you'll be finding spirochetes. Okay, you will be finding Botulella intermedia. Botulella intermedia is also bacteroids intermediates, which will be also called as Prevotella intermedia. इसको हम Prevotella intermedia भी बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें ANUC में ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. तो इस केस में इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम देखते हैं तो देयर इज एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर्स टू इंटरमीडिएट साइज स्पायरोकीट्स एंड पी इंटरमीडिया. बिकॉज स्पायरोकीट्स और पी इंटरमीडिया है तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बड़ी हुई होती हैं ब्लड में. तो आप फाइंड आउट करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ दिखाई देंगी जो कि स्पायरोकीट्स और इंटरमीडिया के अगेंस्ट मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ अबाउट एडल्ट पेरियोडोंटाइटिस. एडल्ट पेरियोडोंटाइटिस में क्या होता है, देयर इज एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर्स टू पी जिंजिवालिस and other pathogens, cell-mediated immunity to bacteria, occurrence of immune complexes in tissues. So person is going to have immune complexes, person will going to have cell-mediated immunity, person is going to have elevated antibody titers against P. gingivalis. Okay,
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो कि एडल्ट पेरियोडोंटाइटिस में पी जिंजिवालिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ दिखाई देखने को मिलती हैं, ठीक है. सो यू नीड टू मार्क ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ पी जिंजिवालिस एज वेल एज सेल मीडिएटेड. नेक्स्ट इज़ LGP. Okay, I think I have covered this also in the second video. Yes. Okay, so I also covered it in the second video, but मैं थोड़ा सा और एज अ रिवाइज हो जाएगा आपका, मैं बता देती हूँ आपको. LGP इज़ नथिंग बट दैट इज़ लोकलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है. दैट इज़ लोकलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस. ओके, localized juvenile periodontitis. Okay, so what you need to know that juvenile thing, it can be replaced with the aggressive. So you can say localized juvenile periodontitis, you can also say localized aggressive periodontitis. दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है. तो जो localized juvenile periodontitis होती है उसमें क्या होता है, there is elevated antibody titers against actinomycetes, actinomycetum comitans and PMN chemotactic and phagocytotic defects. There is PMN की मतलब न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म जो होता है इसमें डिफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है. न्यूट्रोफिल्स के थ्रू जो कीमोटैक्सिस हमने पढ़ा था ना पैथोलॉजी में, उस प्रोसेस में डिफेक्ट होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोकलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस आपको याद रखना है कि इन केसेस में एक तो जो पेरियोडोंटाइटिस होती है ना, चाहे वो रिफ्रैक्टरी पेरियोडोंटाइटिस हो, चाहे वो लोकलाइज्ड हो, चाहे वो जनरलाइज्ड हो, पेरियोडोंटाइटिस में मोस्ट कॉमनली आपको एक्टिनोमाइसिटीज़ मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ना एक्टिनोमाइसिटीज़, एक्टिनोमाइसिटम कॉमिटेंस की आपको बहुत ज़्यादा मिलता है. तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, प्लस क्योंकि इसमें न्यूट्रोफिल्स का जो कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो प्रोसेस डिफेक्ट हो जाती है. जर्नलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस जो होती है उसमें एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर्स अगेंस्ट पी जिंजिवालिस उसमें मिलता है, बिकॉज जर्नलाइज्ड है. साथ में PMN कीमोटैक्टिक एंड फैगोसाइटोटिक डिफेक्ट्स. तो PMN दैट इज़ न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक प्रोसेस में डिफेक्ट रहता है, प्लस फैगोसाइटोटिक डिफेक्ट्स होता है. तो जर्नलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस में आपको याद रखना है कि पी जिंजिवालिस के अगेंस्ट आपको टाइटर्स मिलेंगे. लोकलाइज्ड में आपको एक्टिनोमाइसिटीज़, एक्टिनोमाइसिटम कॉमिटेंस के अगेंस्ट टाइटर्स मिलेंगे. ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली याद रखना है कि एनग में स्पायरोकीट्स और पी इंटरमीडिया. एडल्ट पेरियोडोंटाइटिस में पी जिंजिवालिस. जर्नलाइज्ड जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस में भी पी जिंजिवालिस मिलता है, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं. उसके बाद लोकलाइज्ड में आपको एक्टिनोमाइसिटीज कॉमिटेंस मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल है उसमें हमने बात करी थी RRP की. मैंने आपको ये पहले फुल फॉर्म्स नहीं बताई थी, दैट इज़ रिफ्रैक्टरी पेरियोडोंटाइटिस. इसमें जो है हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टरी पेरियोडोंटाइटिस में हमें यहाँ पे मिलता है सीवियर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, और PMNs और मोनोसाइट कीमोटैक्टिक डिफेक्ट्स होते हैं, प्लस डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस भी हमें देखने को मिलता है. डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ रहती है, जो कि पेम्फिगस, पेम्फिगोइड और लाइकन प्रिनस इन सब में दिखाई देती है, ठीक है. थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया. हमने येलो, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ग्रीन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे. येलो में हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमनली होता है. येलो पर्पल में हमने पढ़ा था ओडोंटोलिकस और पारवुला. रेड में हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप रेड को RGD करके लिख लो. तो R से आप यू कैन से दिस इज फॉर्साइथियस, बिकॉज फॉर्साइथियस इज हैविंग R थिंग, तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो. फॉर्साइथियस इज फॉर R, G इज़ फॉर जिंजिवालिस एंड D इज़ फॉर डेंटोलिका, दैट इज़ रेड कॉम्प्लेक्स. ऑरेंज कॉम्प्लेक्स में आपको क्या याद रखना है, P इंटरमीडिया होता है. P इंटरमीडिया और फ्यूजोबैक्टीरियम याद रखना है आपको ऑरेंज कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज पी इंटरमीडिया आपको एनंग में भी दिखाई दे रहा है ना, तो आप ऑरेंज कॉम्प्लेक्स याद रखें. ग्रीन आपको याद रखना है एक्टिनोमाइसिटस कॉमिटेंस, जो कि पेरियोडोंटाइटिस में दिखता है. तो बहुत सारे पेरियोडोंटाइटिस में ग्रीन कॉम्प्लेक्स होता है, कैप्नोसाइटोफेटस और फ्यूजोबैक्टीरियम्स. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद हमने बात की थी कि रेड कॉम्प्लेक्स ब्लीडिंग में इंपॉर्टेंट रहता है. उसके बाद हमने कैलकुलस के बारे में बात करी थी पिछली वीडियो में, जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में बात करी थी, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली जो है कैल्शियम फॉस्फेट में देखने को मिलता है. उसके बाद हमने डिफरेंट क्रिस्टल्स के बारे में बात करी थी. ओके, तो अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ दिस लिम्फोसाइट्स, कि लिम्फोसाइट्स का क्या रेशो नॉर्मली होता है, और बाकी डिफेक्ट्स आइदर जिंजिवाइटिस है या फिर पेरियोडोंटाइटिस है उसमें कैसे डिफ़र करता है.
तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ना हमारे ब्लड में, तो टी ज़्यादा होता है, बी कम होता है. दिस इज़ द नॉर्मल थिंग. टी इज़ मोर, बी इज़ लेस. ठीक है. अब अगर हम इसी रेशो को GCF में देखें, ठीक है, जिंजाइवो क्रेविकुलर फ्लूइड में देखें, जो हम कहाँ से, गम्स में जो सर्कुलर एरिया में हमें फ्लूइड मिलता है GCF, उसके अंदर अगर हम रेशो देखेंगे तो उल्टी हो जाती है उसमें रेशो, उसमें 1:3 हो जाती है TB की. वहीं पे अगर हम जिंजोवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस और HIV इन्फेक्शंस की अगर हम डिस्कशन करें, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं T सेल्स का ही, बट T4 और T8 के रेशो के बीच में बात करते हैं. T सेल्स में ही T4 और T8 का नंबर क्या होता है. जिंजोवाइटिस में T4 ज़्यादा होता है जिंजोवाइटिस में, लेकिन पेरिडोंटाइटिस में दोनों इक्वल होते हैं, और HIV इन्फेक्शंस में T8 ज़्यादा होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिकॉज ये जो टाइटर वैल्यूज़ हैं इनसे हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. कि अगर T8 ज़्यादा है तो इट कैन बी HIV, अगर T4 ज़्यादा है तो इट इज़ जिंजोवाइटिस, अगर दोनों सेम हैं इसका मतलब है पेरियोडोंटाइटिस. तो इनिशियली T4 ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे इक्वल हो जाते हैं, फिर HIV में T8 बढ़ जाता है. तो ये चीज़, ये टेबल इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है. प्लस मोस्ट कॉमनली आपसे ये पूछेंगे कि भी बताओ GCF में TB की क्या रेशो है, तब आपको बताने की उल्टी हो जाती है वो. फिर प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट इन अर्ली जिंजोवाइटिस. अर्ली जिंजोवाइटिस वही होगी, बात करी हमने. वैसे अगर T और B के रेशो के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस केस में T ज़्यादा होता है जिंजोवाइटिस में. पेरिडोंटाइटिस में B बढ़ जाता है, और चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग रेयरली पेरिडोंटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनट्रांसफॉर्म्ड B लिम्फोसाइट्स. ओके. तो मेन चीज़ जो हमेशा पूछ जाएगी कि बताओ जिंजिवाइटिस में क्या चीज़ देखने को मिलती है. जिंजिवाइटिस में T देखने को मिलता है. और बताओ पेरियोडोंटाइटिस में क्या देखने को मिलता है, B सेल देखने को मिलता है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टेबल, दैट इज़ इंसीजन्स इन पेरिडोंटल सर्जरी. तो हम यहाँ पे डिफरेंट इंसीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहला जो है वो एक्सटर्नल बेवल इंसीजन है. पहले एक बार सारे नाम पढ़ लेते हैं. फिर हॉरिजॉन्टल इंसीजन्स हैं. हॉरिजॉन्टल में 3 टाइप के हमारे पास, इंटरनल बेवल, क्रेविकुलर और इंटरडेंटल. फिर आते हैं वर्टिकल इंसीजन्स. तो एक्सटर्नल बेवल जो है इंसीजन, दैट इज़ यूज फॉर जिंजिवेक्टमी. जिंजिवेक्टमी का मतलब कि जिंजाइवा को कट करना. ठीक है, कोई अगर जिंजाइवा का पार्ट अगर इनलार्ज हो गया तो उसको कट करके अगर निकालना है तो दैट इज़ जिंजिवेक्टमी. उसके अंदर एक्सटर्नल बेवल यूज़ करेंगे. और इसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, क्रिकलेंट नाइफ या फिर BP ब्लेड नंबर 11 यूज़ करता है. ठीक है. तो लेट मी शो यू दिस. ओके, एक बार हॉरिजॉन्टल इंसीजन्स का जो 3 पार्ट हैं उनमें देखते हैं कि इंटरनल बेवल जो है उसको हम रिवर्स बेवल भी बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं कई बार कि इंटरनल बेवल को क्या बोलते हैं, रिवर्स बेवल बोलते हैं. फर्स्ट इंसीजन फॉर पेरिडोंटल फ्लैप प्रोसीजर्स. This is sharp thin flap. It removes pocket lining, done with blade number 11 and 15. So it's a first incision, very sharp, and removes the pocket lining. Next is clavicular incision, which is the second incision and carried out with blade number 12. And internal incision is the third one, carried out with Auburn's knife. Vertical incisions are also called as releasing incisions and can be utilized on one or both the ends of horizontal, necessary for repositioning the flaps or necessary for displaced flaps. So that is vertical incisions. Now let us see them. Now can you see horizontal incisions हम इस तरीके से लगाते हैं, vertical इस तरीके से होते हैं. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं external bevel incision. Can you see this image? This is external bevel and internal bevel talking separately. External bevel horizontal इंसीजन्स में आता है. इंटरनल बेवल जो है दैट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज नॉट, आई एम सॉरी, आई थिंक आई कंफ्यूज द थिंग्स. एक्सटर्नल बेवल इज़ द ओनली वन इंसीजन दैट इज़ यूज फॉर जिंजिवेक्टमी. आप देख सकते हो यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको. इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, इट्स द इंसीजन फॉर cutting out gingival part. It is not horizontal. Whereas talking about horizontal incisions, we have internal bevel, clavicular and interdental incisions. So this is how you're gonna make internal bevel incision up to the bone level. Okay, up to the upper edge of the bone. And
This is how all the horizontal incisions look like. You just give first of all this internal bevel incision, that is like this, just parallel to here, like this. Then you just take up and cut from the inside, that is clavicular incision, and then you just cut up this part which has been separated. This part, this gingival part, is need to be cut from the rest of it. So you just put it like this, that is interdental incision. So this is how the periodontal flap surgery occurs, all the flaps. So these are the basic steps, that is internal bevel incision, also called as reverse bevel. Why it is called as reverse bevel? Because it is coming back, it's like this, you're going back and going up to the level of bone, upper part of bone, that's why it's called as reverse incision. Then you're going inside the curvature, clavicular incision, and then you're cutting the rest of this. This is interdental incision. So this is how all it look like. Now this is how vertical incisions made in periodontics, that is in the vertical directions. You can see all this cutting like this. So all these incisions you will be like vertical incisions in periodontics. So all these incisions which are made like very much parallel to the long axis of the teeth, that is called as a vertical incision. So one thing you need to know, that vertical incisions are the releasing incisions, can be utilized on one or both the ends of horizontal, like this is the horizontal and these are utilized on both the ends of the horizontal, necessary for repositioning and for displacing it. Okay, then I've told you about earlier these kind of incisions. I've told you these are horizontal incisions. So different incision is given up or made with different instrument. I've told you that internal bevel incision, that is this one, it is made with a BP blade number 11 or 15. I've told you this. Then I've told you about clavicular incision, which is made with blade number 12, which is the second incision. And then interdental incision, if you cut like this, that is made with the Orban's knife. And external bevel incision, that is going through like this, this is the one which is made with instrument Crickland knife or blade number 11. So this is how we're going to learn all this. Now let's talking about treatment of ANUG. Okay, it is very much important, because ANUG is a thing that is very much important in perio. So you should know completely about it. What are the features, clinical symptoms, treatment. So we have a number of visits, like first, second, third, subsequent visits. So in the first visit itself, we just remove up the pseudomembranes that are there. So we just remove the pseudomembranes and non-attached debris after the application of a topical anesthetic. We just put up an anesthetic which is topical, because obviously it's painful lesions with having pseudomembrane. So we put up topical anesthesia, and then we remove that pseudomembrane and all the non-attached debris. Then the patient is advised to rinse with hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide must be 3% in concentration with equal dilutions with the water. After rinsing, the patient with systemic symptoms and local lymphadenopathies are placed with amoxicillin 250 or metronidazole 250, that is 250 or either 500 grams 3 times a day. So we just give up the amoxicillin or metronidazole for this. So this is the first visit. If the patient is in the first visit, remove the pseudomembranes by applying anesthesia, then just make them to rinse, and then you just give them the medications. In the subsequent second visit, after 1 to 2 days, you just recall the patient and the scaling is performed. You have to do scaling, and oral hygiene instructions need to be given, because there is very much importance of maintaining that oral hygiene. Next, in the third visit, after 1 to 2 days, again scaling and root planing is repeated, and the hydrogen peroxide rinses are suspended and chlorhexidine rinses continued. So up to the third visit, like up to the 3 to 4 days, hydrogen peroxide rinses have been suggested. After that,
there is coming back to chlorhexidine rinses for about 2 to 3 weeks. After this, or the subsequent visits, patients without other gingival disease are dismissed for 1 week. Tooth extractions or periodontal surgery should be postponed up to 4 weeks. If there is a need of extraction in those patients, you just postpone them for up to 1 month. After that, you just take it out. So this is a complete plan of ANAC patients. And the question in treatment of ANAC, which of the following is not indicated on the first day, that is scaling. You need not to do scaling on the first day. You have to perform it on the second and third visit. Okay. Now let's talk about some of the tests and some of the instruments which are very important. They just come up as it is in the question, and you just need to mug up that what is perio test. Sometimes people ask what is perio test. So one thing that you need to know about perio test is a test for detection of tooth mobility. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ टूथ मोबाइल है किसी का तो क्या टेस्ट करना चाहिए. So as a periodontist, you need to know for mobility you just take up perio test. Periodontometer is an instrument used for detecting tooth mobility. Okay, so 2 types of tests are there for tooth mobility. One is peri test, another one is periodontometer. You need to know both the instruments. They just come up as it is in the question, peri test and periodontometer. Next is peridex and periogard. Now peridex and periogard, prescription solution of 0.12 chlorhexidine. Peridex and periogard is a prescription solution of 0.12 chlorhexidine. It should be prescribed. It should be given by a doctor. That is peridex and periogard. Next is periogard. There is a difference between the spellings. Okay, so you need to see the differences in the spellings because it is quite confusing. This periogard is a chair-side test to detect the presence of aspartate aminotransferase in GCF. अगर हमें जो gingival clavicular fluid है उसमें ये देखना है कि उसमें AST that is aspartate transaminase है, aspartate aminotransferase है या नहीं है, उस चीज़ को find out करने के लिए हम periogard use करते हैं. It's a test. So it has come up in the paper also. You need to know it. Periogard is GARD is a test for detecting the AST in GCF. Now there is perio monitor how. This perio monitor how it measures the amount of ASTs in the GSF, but it's not a chair side test. If you just do a test by sitting next to a patient, very quick test, rapid test, it's periogard. But if you want to do a test but not a chair side test, just to find out AST in the GSF, use perio monitor how. Next is pocket watch. Now what is this pocket watch? It detects aspartate aminotransferase through colorimetric detection. So it is also a chair side test. You are finding AST in it through colorimetric detection. This is the difference. So pocket watch. Next is periotriever. It's Schwarz periotrievers. Sometimes it is called as Schwarz periotriever. It's highly magnetized instruments designed for retrieval of broken tips of the instruments from the periodontal pocket. Sometimes when we are analyzing the pocket or whatever doing, if the instruments just broke up in the gingival clavicular fluid or in the sulcus, so you need to just take them out. So we need highly magnetized instruments for doing all this purpose. That's Schwarz periotrievers. It's very important. Next is osmoscope. Now osmoscope detects halitosis. If someone's breath is very smelly, the dentist can use osmoscope. Next is periotemp probe. Now periotemp probe sounds different. This detects pocket temperature. You have temp something, so it's finds out the temperature of the pocket of 0.1 degree Celsius from referenced subgingival temperature, demonstrates the
periodontal disease activity by measuring the temperature ranges in the sulcus. So basically, if you want to measure the temperature ranges in the sulcus, you need to use periotemp probe. Next is periodron, which is very frequently asked question. Like you will just have this question like for a lot of times. Most of you must be knowing it. Periodron is electronic instrument used to measure the GCF. So whenever there is a need for calculating or quantitatively the amount of GCF, go with the periodron. We have perio paper, which is a bolter paper used in measuring GCF by electronic method. Okay, so the paper which can be used for finding of the GCF is perio paper. Perio chip is a chlorhexidine chip. Okay, it's a chip having chlorhexidine in it, which is placed in the pocket for local drug delivery. Okay, sometimes the pockets are so bad that you need to put up chip on there, so that slow release of the chlorhexidine from these perio chips will take place and it will lead to healing. Next is perio aid. Now this is a toothpick with a handle. Okay, it sounds like a first aid box, but it's not. It's a toothpick with a handle. Okay, so it's a toothpick actually. Perio aid. Next we have periocline. It's 2% minicycline used in local drug delivery. Okay, so sometimes we need to have a local drug deliveries, local anesthesias, so we need periocline. It's just like a clip, okay, having minocyclines, so you need to remember periocline. Next, talking about perio check. Perio check is also a chair side procedure, rapid chair side test kit developed to detect neutral proteases. Need to find out neutral proteases, collagenases in GSF. You will just have perio check. कोलैजनेज अगर चेक करना है पेरियो चेक यूज़ करिए. रैपिड चेयर टेस्ट है. पेरियो स्कैन भी एक चेयर साइड टेस्ट है. पेरियो स्कैन में क्या निकलता है? पेरियो चेक में तो कोलैजनेज या प्रोटीजेस हमने निकाल लिए, बट पेरियो स्कैन इज अ डायग्नोस्टिक डेवलप्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया प्रोफाइल यूजिंग एन एंजाइम रिएक्शन फ्रॉम प्लाग आइसोलेटर्स. यहाँ पे हम एक रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन होती है, एंजाइम रिएक्शन होती है फ्रॉम प्लाग आइसोलेटर्स के थ्रू. उससे हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया प्रोफाइल है नहीं है. तो पेरियो स्कैन जो है हम उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद वी हैव पेरियो वाइज प्राइमर प्लास्टिक प्रॉब. पेरियो वाइज प्राइमर प्लास्टिक प्रॉब, इट्स अ प्रॉब which can be used with a natural or implanted teeth, and this perio probe has multicolored markings, green colored codings from 0 to 3, a red mark from 5, and a red color coding from 7 to 10. So it's a colorful probe having green markings for 1 to 3, then the red from, like you just need to know that from 0 to 3, then at 5, then at 7 to 10. This markings with different colors like green over here and red over here. So this is particularly a perio probe, perio wise primer plastic probe, plastic material. Okay, then you need to know about this periostat. Now this periostat is a 20 milligram doxycycline used as adjunct to scaling and root planing in treatment of chronic periodontitis. So periostat is also frequently asked. Some people just forget it, but you need to know that if there is stat, so it will be having definitely doxycycline, and it is every time given after scaling. Okay, then you need to know there is something called as periodontine. Periodontine is actually a virulent factor of P. gingivalis. It is an alpha 1 protease inhibitor of human neutrophil elastase. So basically it's a virulent factor of P. gingivalis. So you need to know that P. gingivalis has a very virulent factor, that is periodontine. Then we have periotome. Now this periotome is used in the extraction of a tooth for implant placement. Okay, we need to place an implant. So for placing it, we need to have some areas, so we need to extract it. So it is used in the extraction of the tooth for implant placement. It's a narrow flat instrument injected apically into the sulcus to slightly expand the adjacent periodontal tissue. So that's why it's called as periotome. Tome is something जैसे कि किले होते थे ना, उनके ऊपर बुर्जियाँ होती थी ऐसे करके, नीचे ऐसे किला टाइप होता था. तो ये जो होता है पेरियोटोम्स होती हैं. तो यू जस्ट कैन रिमेंबर पेरियोटोम विद implant placement. Okay,
Next, let's talk about periostar. Actually, it's a automatic sharpening instrument. It's actually a sharpening instrument. It's like star. So as a star is very sharp, so you can remember sharpening instrument. And there is periodontal susceptibility test. It's a test for the presence of IL-1 gene. It's very important, periodontal susceptibility test, because it's asked a very number of times. That is interleukin 1 test. Then prognostic is a chairside test and aids in detection of serine proteases and elastases. Basically, proteinases and elastases have been found out with prognostic. Then we have BioLyse, which aids in detection of this elastase. Okay, so elastase is also a thing. Like आप इससे ये सीख सकते हैं कि elastase कितना ज़्यादा यूज़ आता है पेरियोडोंटाइटिस या सब ऐसी चीज़ों में फाइंड आउट किया जाता है बहुत ज़्यादा. तो आप याद रखो कि सिर्फ इलास्टेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बायोलेज यूज़ कर रहे हैं. अगर हम इलास्टेज के साथ प्रोटीजेस भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम प्रोग्नोस्टिक यूज़ कर रहे हैं. टोपाज एक चेयर साइड टेस्ट है जिसमें कि हम टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करते हैं विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड मेजर्स DCF प्रोटीन लेवल. ठीक है, DCF में कितना प्रोटीन है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं टोपाज में. तो एक टेबल थी जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं. उसके बाद फ्लैप्स के थ्रू हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शंस, एंड इफ यू लाइक इट the video, just like it and subscribe to your relatives, friends, families, whosoever need it. And I'll be coming with the next video. So keep learning and take care.